हेलो फ्रेंड्स, आज अपनी है इंडियन पॉलिटी दे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दी लास्ट क्लास। सो आओ स्टार्ट कर देना। क्वेश्चन 451, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ नॉन कांग्रेस मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑप्शंस है JB कृपलानी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी, TT कृष्णाचारी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। Dr. B.R. Ambedkar was a non-Congress member of Constituent Assembly. Which of the following is not part of state government structure? Options है executive, judiciary, legislature, governor's house. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, governor's house. State governments are made up of 3 branches: executive, legislative and judicial. A declaration that democracy is a government of the people, by the people, for the people was made by। तो ये अपन को पता है किन्ना ने क्या है, अब्राहम लिंकन ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल इज सेट बाय अब्राहम लिंकन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीवीपैट? ऑप्शंस है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरीफाइएबल पोजीशन ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल या फिर वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल इज द करेक्ट आंसर है। Which of the following countries have an unwritten constitution? Options है USA, UK, पाकिस्तान, इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, UK. UK has an unwritten or uncodified constitution. National Voters Day in India is celebrated on. Options है 26 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी, 23 जनवरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 25 जनवरी। नेशनल वोटर्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 जनवरी। हु इज नोन एज फादर ऑफ लोकसभा? तो अपन पता है GV मावलंकर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑल्सो नोन एज दादा साहेब मावलंकर, इज नोन एज फादर ऑफ लोकसभा। Who was the first woman Chief Election Commissioner of India? तो अपन पता है कौन है, VS रमा देवी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। VS रमा देवी was an Indian politician who was the first lady to become 8th governor of Karnataka and 9th Chief Election Commissioner of India. A person not enrolled as an advocate under the Advocates Act 1961 can be permitted to appear before a court in any particular case under options है सेक्शन 32, सेक्शन 31, सेक्शन 34, सेक्शन 42। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सेक्शन 32। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961, any court authority or person can allow someone who is not enrolled as an advocate to appear before them in particular case. What is the unit of EVM? Control unit and ballot unit, control unit and display unit, central unit and ballot unit, central unit and display unit. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कंट्रोल यूनिट एंड बैलेट यूनिट। इसका करेक्ट आंसर की है कंट्रोल यूनिट एंड बैलेट यूनिट। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप दसना है केड़ा पेयर करेक्ट है। 129 आर्टिकल अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सीटिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 131 आर्टिकल सीट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 126 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124 एनजैक यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 126 ਜਿਹੜਾ है वो सही है। आर्टिकल 129 है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 131 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ है
ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124 बी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਐਨਜੈਕ। Which of the following is called the upper house in a state legislature? ऑप्शंस है राज्य सभा, विधान सभा, सेक्रेटरीट या फिर विधान परिषद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विधान परिषद। The upper house of a state legislature in India is called विधान परिषद। Name the first chief election commissioner of India। तो अपन को पता है कौन ਹਨ, सुकुमार सेन। Option C is the correct answer. The first chief election commissioner of India was Sukumar Sen. According to Article 202, who shall present the annual financial statements before the House of State Legislature? Options है गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर, चीफ मिनिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गवर्नर। To Article 202 of Constitution of India, the governor is responsible for presenting the annual financial statement. The disciplinary committee of a state bar council, after giving the advocate concerned and the advocate general an opportunity of being heard, may make any of the following orders except। Options है अपने को ले transfer his name from one state bar council to bar council of another state। B option dismiss the complaint। C reprimand the advocate या फिर D option suspend the advocate from practice for such periods as it may deem fit। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रांसफर हिज नेम फ्रॉम वन स्टेट बार काउंसिल टू बार काउंसिल ऑफ अनदर स्टेट। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Who has the power to constitute a finance commission to review the financial status of panchayats? तो ऑप्शंस है सरपंच, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर, गवर्नर, चेयरमैन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गवर्नर। According to Article 243I of Indian Constitution, the governor of a state has the power to constitute a finance commission to review the financial position of panchayats. According to the Constitution of India, which of the following pair article contents is correct? तो अपने को लिए इक्को स्टेटमेंट है, आर्टिकल्स दो अलग अलग है। पावर ऑफ द स्टेट्स टू एंट्रस्ट फंक्शंस टू द यूनियन, एक है आर्टिकल 259, एक है आर्टिकल 263। तो अपने को लिए ऑप्शंस है नाइदर वन नॉर टू, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ना ही पहली ते ना ही दूसरी। आर्टिकल 258A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया gives the governor of a state the power to entrust functions to the union government with the consent of central government. Provision for protection and improvement of environment and protection of forests and wildlife is provided under which of the following? The options है fundamental duties, fundamental right, DPSP, writ jurisdiction doctrine। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फंडामेंटल ड्यूटीज़। आर्टिकल 51A ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਐਂਡ ਇੰਪਰੂਵ ਦ ਨੈਚੁਰਲ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फॉर बैगिंग इज पनिशेबल with juvenile justice care and protection of children act 2015 under। ऑप्शन है अपने को ले a term which may extend 7 years and shall also be liable to be fined of 3 लाख रुपीस, या फिर एक्सटेंड कर दिया 1 ईयर एंड फाइन है 2 लाख रुपीस, या फिर 3 ईयर्स ते फाइन है 50,000 रुपीस, या फिर 5 ईयर्स ਅਤੇ फाइन है 1 लाख रुपीस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अ टर्म विच में एक्सटेंड 5 ईयर्स
and shall also be liable to fine of 1 lakh rupees. Section 76 of the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 states that anyone who employs or uses a child for begging or causes a child to beg can be punished with up to 5 years in prison or fine of up to 1 lakh rupees. Which of the following sections of the Indian Citizenship 1955 includes citizenship by descent? Options are Section 5, Section 4, Section 3, Section 2. Is the correct answer है option B, Section 4. Section 4 of the Citizenship Act 1955 provides that a person born outside India on or after 26 January 1950 shall be a citizen of India by descent only if his father is an Indian citizen at the time of his birth. According to Indian Constitution, केड़ा आर्टिकल है जेड़ा इनकरेक्ट है? 136, 146, 141 या फिर 140? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 141 नंबर जेड़ा आर्टिकल है वो इनकरेक्ट मेंशन है. कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इशू सर्टेन रिट्स आर्टिकल है आर्टिकल 139. हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो अपन पता है कौन है, SV कृष्णमूर्ति राव. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. द फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन वॉज श्री SV कृष्णमूर्ति राव. Which article of Indian Constitution is related to the duration of पंचायत? ऑप्शंस है 243H, 243I, 243E, 243G. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 243E. Article 243E of Constitution of India deals with duration of panchayats and their constitution if they are dissolved. The 11th schedule of the Constitution of India includes subjects under the functions of the panchayat. Options are 25, 19, 32, 29. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 29. The 11th schedule of the Constitution of India includes 29 subjects that relate to the functions of the panchayat. According to Indian Constitution, which of the following is correct regarding panchayats? The first statement है Gram Sabha means a body consisting of a persons registered in electoral rolls relating to a village comprised within the area of panchayat at village level. तो ये स्टेटमेंट सही है. पंचायत एरिया मीन्स द टेरिटोरियल एरिया ऑफ पंचायत. तो ये भी स्टेटमेंट सही है. अपना करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. Both first and second statements are correct. Which of the following is called the upper chamber? Options है राज्यसभा, ग्राम सभा, लोक सभा या फिर स्टेट असेंबली. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लोक सभा. The Lok Sabha or House of People is the lower house of India's bicameral parliament and is also known as popular chamber. According to the Constitution of India, which of the following pair of state legislature minimum age of membership is correct? तो अपने को फर्स्ट स्टेटमेंट है लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट लेस देन 30 years. तो ये स्टेटमेंट गलत है. लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉट लेस देन 25 years. तो ये भी स्टेटमेंट गलत है. तो अपना करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नाइदर 1 nor 2. लेजिस्लेटिव असेंबली दी कितनी है, नॉट लेस देन 25 years. तो लेजिस्लेटिव काउंसिल दी नॉट लेस देन 30 years. हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? तो अपन पता है कौन है, जवाहरलाल नेहरू. तो बी इज द करेक्ट आंसर. Jawaharlal Nehru was the first chairman of India's Planning Commission, which was established in 1950. Which of the following states is not included in 6th schedule of Indian Constitution? तो अपने ऑप्शंस है त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर. मणिपुर इस दे विच ऐड नहीं है. किहड़े किहड़े 4 स्टेट्स ऐड हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम.
Who said that fundamental rights are the conscience of the constitution? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗ੍ਰੈਨਵਿਲੇ ਔਸਟਿਨ ਨੇ। The B option is the correct answer. Granville Austin described the fundamental rights and DPSPs of the Indian Constitution as the conscience of the Constitution. Which of the following provisions can be made by law by state legislature? तो अपनी स्टेटमेंट है, atomic energy and mineral resources necessary for its production. तो ये स्टेटमेंट की है, गलत है। Reservation of seats in any पंचायत in favor of SC, ST and OBC, ये स्टेटमेंट सही है। Authorizing a पंचायत to levy appropriate taxes, तो ये भी स्टेटमेंट अपनी सही है। तो अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। उस अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है अपना ऑप्शन ए, ओनली 2 and 3. फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. Which of the following fundamental rights are available to Indian citizens but not to aliens? The statements है, equality before law, freedom of expression and speech, right of minorities to conserve their language and culture, protection to life and liberty. तो अपना सेकंड से थर्ड स्टेटमेंट सही है और उस अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ओनली 2 and 3. The following fundamental rights are only available to the citizens of India and not to aliens. तो केड़े आर्टिकल है? आर्टिकल 15, 16, 19, 20, 30. Which article of Indian Constitution is related with the powers to impose taxes and funds of पंचायत? ऑप्शंस है आर्टिकल 243 जी, 243 आई, 243 एच, 243 के. इज द करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 243 एच. आर्टिकल 243 एच इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पावर्स टू इम्पोज टैक्सेस बाय एंड फंड्स ऑफ द पंचायत्स. Which one of the constitutional remedies is also known as postmortem? The options है prohibition, mandamus, certiorari, covenanto. तो इज द करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, certiorari. Certiorari is the constitutional remedy which is also known as postmortem. The first citizen of the Republic of India is, options है President, Chief Justice of Supreme Court, Prime Minister of India, Speaker of Lok Sabha. तो इज द करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, President. The President of India is considered the first citizen of the Republic of India. Which of the following is या are the exclusive powers of Lok Sabha? तो अपनी स्टेटमेंट्स है, to ratify the declaration of emergency, गलत है, to pass a motion of no confidence against the Council of Ministers, तो सही है, to impeach the President of India, तो गलत है. इज द करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली सेकंड. ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਗਲਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ. ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ Solicitor General of India are the only officers of the government who are allowed to participate in the meetings of Parliament of India. तो ये स्टेटमेंट गलत है. According to Constitution of India, the Attorney General of India submits his resignation when the government which appointed him resigns. The AV statement गलत है. Option D is the correct answer, neither 1 nor 2. The Solicitor General does not participate in the meetings of Parliament. तो जड़ी अपनी second statement सी, he can quit by submitting his resignation only to the President. Consider the following statement and choose the correct statement. First statement है, a bill amending the constitution requires prior recommendation of the President of India. ये statement गलत है. Second statement है, when the constitution amendment bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to give his assent. तो ये statement सही है. A constitution amendment bill must be passed by both Lok Sabha and Rajya Sabha by special majority and there is no provision for joint sitting.
ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ। Option B is the correct answer, only 2 and 3. According to Article 368, the prior approval of President is not required for Constitutional Amendment Act. Consider the following statements and choose the correct statement. पहली statement है there is only one citizenship and one domicile. ये statement सही है। A citizen by birth only can become a head of state. तो ये statement गलत है। A foreigner once granted the citizenship cannot be deprived of it under any circumstances. तो ये भी statement गलत है। Option A is the correct answer, only one. गलत स्टेटमेंट्स ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। As the national level, which ministry is a nodal agent to ensure effective implementation of the scheduled tribes and other traditional forest dwellers? Recognition of Forest Rights Act 2006। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ? Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Panchayati Raj, Ministry of Rural Development, Ministry of Tribal Affairs। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ correct answer ਹੈ option D, Ministry of Tribal Affairs। The Ministry of Tribal Affairs is the central agency responsible for the effective implementation of Forest Rights Act at national level. A parliamentary system of government is one in which options है all political party in the parliament are represented in the government. The government is responsible to the parliament and can be removed by it. The government is elected by the people and can be removed by them. The government is chosen by the parliament but cannot be removed by it before completion of a fixed term. That is the correct answer है option B. The government is responsible to the parliament and can be removed by it. ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। The preamble to the Constitution of India is a part of Constitution but has no legal effect, not part of Constitution but has no legal effect, part of Constitution but has same legal effect as any other part, a part of Constitution but has no legal effect independently of other parts. That is the correct answer है option D, a part of Constitution but has no legal effect independently of other parts. The preamble to the Constitution of India is part of Constitution but has no legal effect independently of other parts. With reference to the provisions contained in Part 4 of the Constitution of India, which of the following statements is या are correct? The statement है they shall be enforceable by court. They shall not be enforceable by any court. The principles laid down in this part are to influence the making of laws by the state. That is the correct answer है option D, only 2 and 3. Part 4 of Indian Constitution, which deals with DPSP, is not enforceable by any court. However, the principles in Part 4 are fundamental to the country's governance and it is the government's responsibility to apply them when making laws. Consider the following statements and choose the correct statement. The President of India can summon a session of the Parliament as such a place as he thinks fit. Second है अपने को ले the Constitution of India provides for 3 sessions of the Parliament in a year but it is not mandatory to conduct all 3 sessions. A statement गलत है। There is no minimum number of days that the Parliament is required to meet in a year. तो अपने को लिए correct answer है option C, only 1 and 3. The session of Lok Sabha is called for at least 2 times a year. Rajya Sabha has equal powers with Lok Sabha in options है the matter of creating new all India services, amending the constitution, the removal of the government, making cut motions. That is the correct answer है option B, amending the constitution. ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੇਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Which one of the following categories of fundamental rights incorporated against untouchability as a form of discrimination? तो ऑप्शंस है right against exploitation, right to freedom, right to constitutional remedies, right to equality. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, right to equality. राइट टू इक्वैलिटी किन्ने आर्टिकल्स 14 ਤੋਂ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 17th ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ which abolishes untouchability as a fundamental right. A constitutional government by definition is a government by legislature, popular government, multi-party government, limited government. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, limited government. Constitutional government is by definition limited government. It means government conducted according to rules and principles which are binding on all political actors and which therefore help to constrain the unfettered exercise of power by separating or dividing it. The mind of the makers of the Constitution of India is reflected in which of the following? Options है preamble, fundamental rights, DPSP, fundamental duties. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, preamble. Preamble of the Indian Constitution reflects the mind and ideas of its framers. If the President of India exercises his power as provided Article 356 of Constitution of particular state, then options है the Assembly of the state is automatically dissolved, the power of the legislature of that state shall be exercisable by or under the authority of Parliament, Article 19 is suspended in that state, the President can make laws relating to that state. So is the correct answer है option B. The powers of the legislature of that state shall be exercisable by or under the authority of Parliament. Option B is the correct answer. Consider the following statement and choose the correct statement. The Speaker of the Legislative Assembly shall vacate his or her office if he or she ceases to be a member of the Assembly. Second है whenever the Legislative Assembly is dissolved, the Speaker shall vacate his or her office immediately. तो ये statement गलत है. Option A is the correct answer, only first. Whenever the assembly is dissolved, the speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the assembly after the dissolution. ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਅਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।